ब्रेक पर आम स्वतंत्र आलोचना को आपण स्वागत। विभिन्न दाबी नहीं अग्निशम कर्मचारी आंदोलन आंदोलन जोगु जरूरीकालीन सेवा ठप हो जाए। विभिन्न अघटन मुकुली पारना लोके केउठी अग्निकांड रे घर जली जाउछि तो केउठी दुर्घटना रे प्राण हराउछन्ति लोके। ए प्रसंग रे रहिछि आज आम स्वतंत्र आलोचना किए लिभाई बनिया। एने अधिक आलोचना आज आम सहित स्टूडियो अच्छा सुभाष चंद्र पाढ़ी अच्छा अवसरप्राप्त वरिष्ठ अग्निशम अधिकारी और जानकीश बड़पंडा अच्छा आज्ञा आज्ञा अवसरप्राप्त आम सहित अच्छा बुद्धिजीवी अच्छा जानकीश बड़पंडा आपण मानक उभय को स्वागत करने चाहिए। श्रीजुक्त पाढ़ी आपन मोर प्रथम प्रश्न रहिबो किंतु उभय को ता पूर्व दुईटा एग्जांपल देवी। गोटे मयूरभंज मोरडारू खबर आसुछि 2 वर्षर पिलाटी खेलुथबा बेले कूओ रे पड़ीगला। परिवार लोके स्थानीय लोके बारंबार अग्निशम बाहिनी को खबर देले फोन कले से माने केही आसिले नाही पिलाटी मरीगला। दसपल्ला श्रीरामचंद्रपुर कथा में देखा गोटे अग्निकांड घटिला गाँ लोके दसपल्ला अग्निशम बाहिनी को बारंबार डाकिले केही सुनलेनी 8 बखरा घर पोड़ी पाउंस होगला। मात्र 2टी एग्जांपल प्रतिदिन बहुत गुड़ाए घटना एमती सामना को आसुची जीवन चलीगला घर पोड़ीगला अनेक गुड़ाए घटना घटुची दायी किए प्रथम प्रश्न मोर रहिबो श्रीजुक्त पाढ़ी। दायी तो देखिया को गले मुख्यतः सरकार प्रथम दायी तार कारण होउची। अच्छा जार दायित्व किंतु सेमाने प्रथम दायी नहंती जार कारण सेमाने एई जिनिसटा करिए बोली आंदोलन पंथा ग्रहण करिए बोली आगुरु सरकार को जणै छंती जे सरकार जदि तार विहित पदक्षेप नहीं थांते किबा किछि बंदोबस्त करि थांते ताहले हुए तो एई अघटन घटि न थांता। साधारण लोक भोगिबे संघ और प्रशासन भितर जो लड़ाई चली संघ और सरकार भितर साधारण लोक भरिबे साधारण लोक जीवन चली तांकर एटा बड़ दुखर विषय। एटा भी मते दुख लागुची जेहेतु अग्निशम सेवा बाहिनी जनसाधारणकर सेवा करिया पाई नियोजित हेइची आज से सेवारू से माने वंचित होइचंती आमे प्रथमे तार कारण खोजिया पड़िबो काहे से माने वंचित हेले से माने काहे के आंदोलन पंथा को गले जो माने निज जीवन को विपन्न करी निया संगे लड़ाई करथुले पानी भीतर पसिक निज जीवन को विचलन करी आच्छन्न मृत्यु मुखर लोकों को रक्षा करुथुले से माने आज काहे की एई सेवा पाई जीवाकू प्रस्तुत नुहंती। अच्छा मते गोटे कथा कहंतु जदि पिलार जीवनटा बंचै दे थांते कि नियाटा लिभेई दे थांते ताहले कोन तांको आंदोलनटा विफल हो जाय थांता कारण प्रतिदिन एमितिया घटना तो घटुनी सुजुक्त तो से माने काम करले बोली धरा जाय थांता से माने काम कले आंदोलन कले नाही काम कले बोली धरा जाय थांता से माने कर्तव्य रे से माने कर्तव्य करि चालले एमती सब निया लागिबो प्रत्येक कार्य करिवे से माने तामाने आपण एक कथा कहउचंदी कर्तव्य रो हेला हेला समस्या रो समाधान निश्चित भाव मु दुख प्रकाश करूची मु कहूची एवं दुख प्रकाश करूची जोटा कि हेला ठीक नुहे जन जीवन हानि होबाटा हमर सेटा नष्ट होउची जोटा आमे सेटा को दुख प्रकाश करूछु किंतु तथापि हेमान का आंदोलन को मु भी समर्थन करूछी। ठीक अछि वर्तमान हम सहित जानकीश बड़पंडा अछंती सुजुक्त बड़पंडा कर्तव्य हेला हेबा हेला समस्या रो समाधान ए जिनसटा को आपण केमतिया देखुछंती देखंतु हम देशर अवस्था ही से है जापान रे जदि कोनोसी श्रमिक कोनोसी शिल्प संस्थार श्रमिक आंदोलन को लांती से माने जेतिकी प्रोडक्शन करंती जेतिकी घंटा खटंती तार डबल खटंती जा फल कि उत्पादन एते परिमाण रे बढ़ी जाए जोडा कि कंपनी पई के असुविधा सृष्टि करथिला कला बेस्ट पिंधि देला माने सरकार संगे संगे सेत सतर्कता अवलंबन करंती। आपण देखुचंती आज गांधी मार्ग रे भुवनेश्वर शिक्षक माने अहरात्र धारणा रे बसचंती स्कूल कॉलेज स्कूल रे पाठ पढ़ा होनी पिला माने मूर्ख होई जाउचंती ए देश को हम अंधार मध्य को ठेली दउचे। आपण देखंतु जो आग्निक माने जोटा आंदोलन करूचंती मु जा खबर नउथिली आग्निक माने 24 तारिख ठारू आंदोलन पंथा को हाथ को नबा पूर्वरु तांका संघ पक्षरु से माने सरकार को विभिन्न समय दाबी पत्र देइचंती। वास्तव में आम राज्य सरकार हूँ आम मैंने नागरिक मैंने जब अनुभव करुचे जे आग्निक मानकर
जो दाबी अच्छी से दाबी गुड़िक यथार्थ और आंदोलन को गलापर निश्चित भाव में यह एक अहेतुक घटना मान घटो जब कौन जगह निआ लगिगला लिभे कहीं जीवन अनेक लोक जीवन सरकार अधिक जानी किंतु आंदोलन कर प्रतिवाद कर अधिकार समस्त अच्छी मूल्यवान जीवन चली कि ना सेटा तो केबे ग्रहणीय नुहे कि उपाय कौन अच्छे आप देखु जदि राज्य सरकार पुलिस डिपार्टमेंट गोटे कनेस्टेबल जहाँ दरमा पाँच आग्निक को सही सामान दरमा देवाई कौन असुविधा अच्छी आप देखो जेल विभाग अच्छी आपंकर फायर ब्रिगेड अच्छी और पुलिस विभाग अच्छी ये समस्त तो तीन भौणी से तीन भौणीर समस्त समानता न रही जहाँ दाबी कर दाबी गुड़िक अଯौक्तिक अनेकटा नुहे से आंदोलन को जब जाते सरकार दाबी मानिनेला आम निश्चित भाव में दायी करते ये तो गला अग्निशम अधिकारी विषय में कथा किंतु ये सरकारी संवेदनशीलता कथा को सरकार आलोचना भी है आलोचना डका भी है निष्कर्ष भी बाहर ना केमती देखुं जिनटा को कारण बड़ बड़ घटना घटी जाऊँगी जीवन चली जाऊँगी घर पोड़ी जाऊँगी अनेक गुड़ा घटना सामना को देखो 1900 मोर मन अच्छी 1979 मसीह थे पुलिस डिपार्टमेंट आंदोलन को गले रथयात्रा से समय था रथयात्रा कि भाव में सुचारू रूपे संगठित हो पार परिचालन हो पार लॉ एंड ऑर्डर पोजिशन असुविधा हम ना से बीएसएफ को रिक्वेशन कराइला जदि राज्य सरकार पाखे मैंने नोटिस देते यथेष आगुरी 1.5 मास 2 मास आगुरी नोटिस देते आम सेप्टेम्बर मास 24 तारीख आंदोलन को जीवु आम किसी कम करूँ ना तेज से अल्टरनेटिव व्यवस्था कहीं पाखु से जो पुलिस आपंकर जो आग्निक मान जो गाड़ी अच्छी जो पानी थाए सेगुड़िक कहीं जबत करा जाए ना चाबी नहीं आसता जदि से भाव में अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अच्छी कहीं रेडी कले ना ये दायी किए हम कि जदि भलेंटियर मानू कही था आप देखते कि राज्यवासी को कही था आग्निक मैंने 24 तारीख आंदोलन को जाऊँच आम सागर विभिन्न समय आलोचना करूँ अगणतांत्रिक उपाय से दाबी प्रस्तुत साधारण लोके हंतसंत होती स्थिति रही आसंत दर्शक बंधु जानापी आम आपको सीधा सड़क ब्रह्मपुर को नहीं जाऊँ सेठार प्रतिनिधि शक्तिधर राजगुरु शक्तिधर बर्तमान केमती देखुं आप अग्निशम अधिकारी जो आंदोलन चली कौन आभिमुख्य से आज आप देखा पाँच देखो जागृति निश्चित भाव अग्निशम कर्मचारी जो 6 दफा दाबी को लेकिन आज जो आंदोलन कार्यबद्ध आंदोलन आज बर्तमान 3 दिन में पहुंची जो थी कि आम देखिपारे राज्य में जेहतु राज्यव्यापी आंदोलन जारी रही तो बारिपदा कहवा कि नयगढ़ कहवा जो भाई अघटन घटी जाती बर्तमान जहाँ सूचना मिली बर्तमान सुधा जे किसी आग्निक विरुद्ध में कार्यानुष्ठान नापी बर्तमान सरकार विभाग प्रस्तुत होती सस्पेंड करने नोटिस जारी होता बर्तमान जहाँ सूचना मिली तेज तथापि निज जिद मैंने अटल अच्छा कारण जेहेतु 6 दफा दाबी नहीं आज प्रथम थर पर जदिओ कार्यबद्ध आंदोलन कर तथापि बारंबार से उपरिस्थ अधिकारी जरिया दाबी जदिओ उपस्थापन कर दाबी कहीं कर्णपात करना तो आम सहित अच्छा बर्तमान आम अच्छु ब्रह्मपुर स्थित दक्षिणांचल अग्निशम अधिकारी कार्यालय समूह जो तीन दिन धरी मैंने अहरह कारण एम कम हो दैनिक 24 घंटा एम कम तो एम अहरह एम आंदोलन कर जारी बस कौन कह आज 3 दिन में पहुंची आप आंदोलन तथापि सरकार कर्णपात करना आप दाबी आम बहुत दुखर विषय कहूँ जे एते बड़ घटना घटी जाऊँगी फायर सर्विस सेवा न जोगे देवा जो किंतु सरकार एपर्यंत आमर छोटिया छोटिया दाबी गुड़िक ग्रहण करना आम से बेसी दुखित गोटे गोटे आपण धमक मिलूँ शुणुची हाँ आमको धमक दिया तुमको पुलिस अरेस्ट करा गेट भी मझे ताला भितर वाचमैन को कहीकि पका जाइथिला पर आम ये को कहीकि आमर जी अच्छा अक्षय प्रधान तांको कहीकि पर खोलिबा को निर्देश भी देइथिले आउ ए बळी अनुसार आम बाहर राति दिन 24 घंटा ये वर्तमान स्ट्राइक रे कार्यरत जेहेतु आमर जो दाबी अच्छी सरकार मानु नाहांती से दृष्टि दौना निश्चित जेहेतु गोटे गणतंत्र राष्ट्र में आपने आंदोलन करेंगे आप दाबी हासिल करने दाबी करेंगे सरकार स्तर में उपस्थापन करेंगे तेज आपण को निज ऑफिस भितर जदिओ शांतिपूर्ण भाव बसी आते आपको एलाउ करागला ना बाहर रोड उपर आसी बस आमर दाबी पूरण न होगा पर्यंत आम ये अनशन जारी रखू और आमर जो दाबी 6 दफा दाबी आमर दाबी पूरण करने पर्यंत आम एठार समस्ते एक बार ये बसिक रही निश्चित जेहेतु गोटे अग्निशम भली गोटे जदि आम कह गुरुत्वपूर्ण विभाग एठार जदि आंदोलन ओल्लैंट कर्मचारी मैंने दीर्घ 3 दिन धरी आम सहित अच्छा गंजाम जिला विकास मंचर सभापति अच्छा कौन कह आज्ञा बर्तमान आग्निक मैंने कार्यबद्ध आंदोलन कर जो मैंने पानी आ निआ कि प्राकृतिक विपर्य लोक उद्धार कर बर्तमान आज आंदोलन अच्छा दीर्घ 3 दिन बर्तमान अग्निशम विभाग कर्मचारी मैंने ये धारणा बस दीर्घ 3 दिन है से दाबी यथार्थता अच्छी 6 दफा दाबी नहीं से जो आंदोलन कर ये यथार्थ दाबी गोटे है
तांको 8 घंटा ड्यूटी देवा कथा 24 घंटा ड्यूटी दिया होची। द्वितीय कथा है जो चुक्तिभित्तिक जो नियुक्ति दि जाइए गोटे स्लेब सिस्टम भाया डीएफआईडी चुक्ति अनुसार ओडिशा सरकार अति निकुच भाव में चुक्तिभित्तिक शिक्षक बा कर्मचारी बा एमानकु नियुक्ति अड़ी बसी अग्निशम संघ सूचना पाई धन्यवाद शक्तिधर ये थे प्रतिनिधि शक्तिधर राजगुरु आपण मानकु ब्रह्मपुर चित्र देखुते गिरिडोड रु आपण माने अपडेट देखुते पुणी थे आसतु स्टूडियो फेरी आसीबा। श्रीजुक्त पाढ़ी आम सहित अच्छा अवसरप्राप्त वरिष्ठ अग्निशम अधिकारी श्रीजुक्त पाढ़ी ये गोटे बड़ कथा आसूची जो कथा आम प्रतिनिधि आरंभ कहली सरकार बोधे नाली आखि देखेबे और सस्पेंड करा जाई पारे ए जिनसटा को आपण केमती देखुछंती? सरकार तो सब बेले धमक देई आसीचंती एवं धमक मध्य देबे किंतु जते बेले ये कर्मचारी मानकर पेट पोड़ी जाउची पेट पाटनार कथा पड़ी तांकरी पाखरे जड़े पुलिस कनेस्टेबल जड़े फायरमैन ठारू आग्निक ठारू 2000-3000 टंका अधिका दरमा पाइब ये 3000 टंका कम पाइब ताकू केमती लागिबो एका रैंक एका पोजिशन एका सर्विस जड़े पुलिस कनेस्टेबल अपेक्षा जड़े आग्निक बहुत प्रकार काम सेवा करुच्ची आपण खाली निया लिभो नहीं से निया लिभेया सहित सरकार प्रत्येक लॉ एंड ऑर्डर इवन इलेक्शन ड्यूटी पाखु आरंभ करिकी प्रत्येक कार्य दमकल को व्यवहार कराऊँ आग्निक को पहुंचा जाऊँ हाबिलदार को पहुंचा जाऊँ। ठीक अच्छे दाबी तो रही है केवल दाबी ना श्रीजुक्त बड़पंडा आपन उत्तर नापी चाहिए आप देखो शिक्षक अध्यापक राजरास्तार रक्त भंडार कर्मचारी आंदोलन कर अग्निशम कर्मचारी आंदोलन कर सामान दाबी रही स्थायी चाकरी सरकारी सुविधा सुजोग निर्वाचन पाखे आसुथबारु एटा गोटे सेमानकु सुहाइब लाभप्रद हेबो सरकार तांकु कहि परिबा गोटे गिफ्ट देबे ना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कारण एते लोक अछंती। देखंतु ए जिनिसटा को आपण अलग भाव देखा आरंभ करंतु राज्य सरकार पाखे संवेदनशीलतार घोर अभाव उदाहरण देले आपण बुझिबे एम्बुलेंस जाउची पेशेंट को लेकरी से तार जीवन संरक्षण अछि मुख्यमंत्री को केयर केयर जीव बोली कि एम्बुलेंस कटके दिया जाउची एथिरे आपनकर कोन बुझिले कोटा को प्राधान्य दियंती से भाव में से प्राधान्य दौते आम्बुलांस जाटा दमकल गाड़ी गले समस्त बाट छाड़ी दिखती से लोक मैंने समाज में बास कर प्रत्येक लोक को शिखाई दिखाई आम्बुलांस को बाट छाड़ी दियो दमकल गाड़ी को बाट छाड़ी दियो कारण एगुड़ा हूँ एसेंशियल सर्विसेस राज्य सरकार से कथा कहीं बुझे ना मु तो कहूँ केते गुड़े सेक्टर अच्छी से गुड़ा को तुरंत कार्यक्रम करने कथा आपड़ जमी चकड़ा पोक लगिगले कृषि विभाग पक्ष को मैंने आक्रमण कराए बर्तमान जो आप दमकल विभाग जाती जो मैंने निआ लिभे दिखती जब विलंब होगा लोक मैंने बाढ़ती तार कारण हूँ लोक एत गोटे रोष एत विश्वास को लेकिन से जाऊा लोक भितर साधारण कर्मचारी बेस किसी मुझे देखुली उच्चपदस्थ फायर ऑफिसर मान दरमा प्राय पारिटी अच्छी सामान अच्छी केवल हाबिलदार और कन्स्टेबल टाइप जो अच्छा जहाँ कहते आग्निक एवं हाबिलदार बोली कहते ड्राइवर एम भर तारतम्य अच्छी सेगुड़ी कथा मागुंट ता छड़ा आउ गोटे कथा हूँ जो मैंने समस्त अच्छा कंट्राक्चुअल वर्कर्स फायर डिपार्टमेंट भाई एक मैंने आम जो भावुचे गोटे एसेंशियल सर्विस से आप टेम्पोरारी लोक कहीं दि जाऊँगी यही सब प्रकार जिन आनोमाली सृष्टि बंद कर दिखते मुझे तो भावुँ गृह विभाग मुख्यमंत्री होती मुख्य से गुड़ा जो दृष्टि दिखते अंततः यही जो एसेंशियल सर्विसेस क्षीर सप्लाय आम्बुलांस जीवा फायर ब्रिगेड भाया जिनस मिनिमम स्वास्थ्य जोटा आपंकर आवश्यकता अच्छे सेगुड़िक अंत रखा ही पारता आहरी तो बड़ बड़ प्रोब्लेम अच्छी जमी आप कहते राज्य सरकार पाखे गोटे रोड मैप ना से सब भोट केन्द्रिक चिंताधारा लोक देखा बाकी रहा समस्या समाधान केबे होची एवं केबे लोक पाउछन लाभ अनेक अनेक धन्यवाद। आज आम सहित थिले सुभाष चंद्र पाढ़ी अवसरप्राप्त वरिष्ठ अग्निशम अधिकारी और जानकीश बड़पंडा बुद्धिजीवी जे कि अधिक आलोचना करथिले अग्निशम बाहिनी जो आंदोलन चली ताकू नहीं। तेज आसतु बर्तमान नजर पकाइबा वर्तमान बड़ खबर उपर चेन्नई रे आरंभ हो जाइछि मेक इन ओडिशा रोड शो मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एथिरे जोग दैछन्ति मेक इन ओडिशा पई पुंजीनिवेशकारी को आमंत्रण करिवे नवीन। अहमदाबाद मुंबई कोलकाता और दिल्ली रे निवेशक सम्मेलन आयोजित हेबा परे एबे चेन्नई रे आयोजन होइछि इन्वेस्टर्स मीट ओडिशा रे पुंजीनिवेश पई आवश्यकों को निवेशकों को आमंत्रण करिवे मुख्यमंत्री।
privileged to be one of the largest investors in the state of Orissa. Jio's investment in Orissa for development of digital infrastructure and services have opened new avenues for growth for high-tech industries in the state. It has a huge connectivity like Paradip Port and Dhamra Port through the road and freight corridor for railway. So it will be very easy to connect to the world. The Tata Group is proud of its century-old association with the state of Odisha. Recently, our modern steel plant at Kalinganagar has put Odisha in the world steel map. The state's modern IT infrastructure has plug-and-play facilities and is one of the foremost campuses. For us in the Aditya Birla Group, Odisha has been one of our most preferred investment destinations. Chief Minister Shri Naveen Patnaik's exceptional leadership has been the singular factor in the rapid progress of Odisha. The state government has leveraged its competitive advantages, including its progressive policies and governance framework, are a big pull factor. In a span of just 3 years, we have doubled cargo at our Dhamra port. The support we received from the Honorable Chief Minister Sri Naveen Patnaik ji and his government is outstanding. We at L&T take great pride in supporting the Skill in Odisha initiative. We have collaborated with Government of Odisha in imparting skills in multiple sectors in the last 6 years. ITC has a substantial and growing presence in the state of Orissa. The low cost of operations, the availability of talented manpower, and the robust infrastructure make Orissa a compelling investment destination. Wherever you go in the world, you hear about urban decay. Welcome to Bhubaneswar. Here we talk about the urban bloom. I welcome you to Odisha. Come, join the juggernaut. Ladies and gentlemen, for all those interested in setting up industrial units in Odisha, well, the procedure is fairly simple. All you have to do is fill up the investment intention forms kept in your folders, and the Invest Odisha team will get in touch with you to handhold and facilitate your project. Ladies and gentlemen, I would like to now invite next Shri Sanjeev Chopra
Principal Secretary Industries Department, and may I request him to kindly make the presentation showcasing the opportunities Odisha has to offer across diversified sectors. Over to you, Mr. Chopra. Honorable Chief Minister Odisha, Honorable Ministers, dignitaries on the dais, Captains of Industry, senior officials of the state government, friends, ladies and gentlemen. It's my privilege to give you a small brief on the advantages that Odisha offers to potential investors. You've seen a short movie which talks about the attributes of the state in terms of its various advantages. Now, just building on that, let me just offer you 10 slides on the 10 advantages that Odisha has, which would make it a very compelling value proposition for any investor. In fact, just before the meeting, Mr. Tyagarajan was mentioning about the fact that Odisha is not so well known outside the state. So that's a challenge that we are now trying to meet head on. There are advantages, there are opportunities which Odisha offers, but unfortunately, we have been unable to reach out to the extent that we should have. So probably this is just one more step in that direction to ensure that the advantages and the opportunities that Odisha has is made known to the potential investors. So the first advantage is the obvious one. The state offers a very stable environment for business because of the governance, the longest serving Chief Minister at present with 18 plus years, and the vision that he has for the state for investment and industry is, I think, mentions a quote: "We want to become the investment destination of choice by continuously creating and delivering outstanding opportunities for business growth, fostering all-round socio-economic development for the state and its people." And this particular vision is manifested in the bottom half of the slide, where you see the tremendous growth that the state has made in the past 18 years in terms of the growth in the metal production. While Odisha was known primarily as a mineral producing state, that has changed in the past 2 decades, and Odisha is the top producer of metals like aluminium, steel and stainless steel. The infrastructure in terms of the port capacity, power generation and the road network have also seen an exponential jump. So backed by all these factors, we see that there has been a great spike in the total investments that the state government has received over the past few years, and also has created a huge employment potential for the youth of the state. Odisha, of course, has been growing at a rate faster than the national average, and as was mentioned by the Chief Secretary, a leading industry association ranked Odisha as the #1 state in terms of investment implementation. The second advantage is that we know where we have to go, so we have a plan in place. So the Vision 2025 mentions about where the state would be by the year 2025, what are the sectors that we will focus, what are the policies which are required to realize those objectives, the infrastructure which will be taken up, the skilling requirements. So it's a comprehensive plan which the Honorable CM unveiled in 2015 and is right now under implementation. So the 6 focus sectors which were already mentioned in the movie, the food processing including seafood, chemicals, plastics and petrochemicals, textiles and apparel, ancillary and downstream in the metal sector, electronics and IT, and tourism. The advantage number 3 is the mesh of ports, roads and rail network which are connecting Odisha to the hinterland and to the ASEAN markets. It's got a long coastline with deep water ports at Paradeep, Dhamra and Gopalpur, which make it very easy for any trading activity. Power surplus state with over 17,600 megawatts of power production, contains 11% of India's water resources, and a natural gas pipeline which is coming up, which would connect the 13 most industrial districts of the state and make the power generated through natural gas at a very, very competitive rate. The East Coast Economic Corridor, which is starting from Kanyakumari, is covering the entire length of the state, and as a result, the regions in the vicinity, the investment regions like the one at Dhamra,
the PCPIR, the Petroleum Chemical and Petrochemical Investment Region at Paradip, the Kalinganagar Investment Manufacturing Zone, which is now becoming the steel hub of the country, the Info Valley, where the electronics and IT sector is coming up very well, and some more sector-specific clusters make this entire region an area which would see, is actually already seeing and would see very, very fast economic growth over the next decade or so, and would be one of the most industrial belts in the entire country. The National Waterway number 5 is coming up, which would connect the industrial regions to ports at Dhamra and Paradip, bring down radically the cost of transporting bulk cargo. The natural gas pipeline I just mentioned to you. The fourth advantage is the fact that Odisha is a resource-rich coastal state. So while many other states have the resources, but this is the only state having a coastline as well. It's a leader in the mineral ore availability, whether you talk of chromite, iron ore, bauxite, coal, manganese. So we are a mineral-rich state, that is quite well known. But the fact of value addition which has happened in the recent past is something which many people are not aware. And going forward, the state government has a vision of adding 50% of adding value to 50% of the metal which is right now produced in the state. So you would see in the next few years a great thrust by the state government on creating an enabling ecosystem for the value-added industries to come up in the state. Skilled in Odisha is a brand which is coming up all over the country, across the globe. The state government has established a skill development authority which is to facilitate the skilling needs of the industries. We are producing almost 200,000 technical manpower every year, a fact which is again not known to many people. And the brand of Skilled in Odisha which is coming up would ensure that the skilled manpower, which already I think Tamil Nadu as well is enjoying the skilled manpower that Odisha produces. And gradually this brand would ensure that just by virtue of the fact that a labor is skilled in Odisha, it would bring a premium in the job market compared to the fact that you are skilled elsewhere in the world. The sixth advantage is the cost of doing business, which is very competitive in terms of the various factors of production, whether you talk of the wage rate of skilled labor or the industrial power tariff. So we've just done this comparison with the other states in the country as to how Odisha fares in the cost of doing business. Industrial power tariff, the cost of living, cost of land, and generally I think you would find that cost of doing production in Odisha would be about 20% less than in many of the other industrial states in the country. We've been talking a lot of the ease of doing business. So state government has set up a very revolutionary system called Go Swift, which stands for Government of Odisha Single Window for Investor Facilitation and Tracking, which meets all the requirements of an industry from the time it conceives of a project till the time it gets the approvals, goes into production and much beyond. So just one portal one has to visit, and all the one's requirements for any interface with the government authorities can get addressed by using this one portal. State government also has put in place policies for other sectors which are the thrust sectors, so as to ensure that the other sectors which require specific attention do not get, let's say, ignored in the process of putting in place a general industrial policy. So the specific industrial policy addresses the specific needs of that particular industry so as to ensure that the ecosystem for that particular sector is conducive. So this is again something the state government has done in the recent past, land bank of almost 125,000 acres, which ensures that the ready availability of land is there for the industry. I think some of the industries from Chennai who have moved to Odisha in the recent past will corroborate about the ease of getting land in the state. We have an online portal which is GIS based, which ensures that an initial recce can be done on this portal, giving your specifications in terms of the requirement of land. For example, one can search for 15 acres of land in 10-kilometer radius of a port, or 30 kilometers of land 30 kilometers from the highway. So these searches can happen, which will make it very easy to identify the land parcels which are readily available with the government, and then subsequently once you give your proposal and get the approvals, the process of land allotment can be then expedited.
The 10th reason is the capital city Bhubaneswar, which is a great place to live and to do business. You may recall that in the Smart City Challenge that the Government of India ran in 2015, Odisha was the Bhubaneswar was the number one in those rankings. The Smart City is coming up very well, and the Make in Odisha conclave is one reason for you to visit the state capital to see the number one smart city in the making. The Make in Odisha conclave happening from the 11th to 15th is not just an investment promotion event. It's an event which goes much beyond that. It is an event where the best minds would meet, would deliberate about the issues facing public service delivery, which would also deliberate on other economic issues that are being faced by the industry and beyond, so that it becomes a great place to meet people, like-minded people, and talk about things which concern all of us. So we would be extremely delighted in case you were to plan your visit to Odisha during that time, and we'll be there to support you in case you were to decide on making Odisha as your next investment destination. We'll be there to handhold you from the beginning till the time you set up your unit. Thank you very much. Thank you, Mr. Chopra, for sharing that very succinct presentation highlighting the 10 key points of the advantage that the state has to offer as a lucrative business destination. Enhanced infrastructure has been one of the main priorities of the state government to support industrial development. The growth of the cement sector has played a major role in the growth of infrastructure within the state. And one of the largest producers of cement in the country, Ramco Cements, have been part of Odisha's growth story. Ladies and gentlemen, I now have the pleasure of inviting Shri P.R. Venkatraman Raju, Chairman of the Ramco Group, and may I please request him to kindly share the group's tryst with Odisha. Honorable Chief Minister of Odisha, Minister for Industries, Chief Secretary, Development Commissioner and Additional Secretary, Principal Secretary to the Industrial Department, other senior officials, dignitaries, ladies and gentlemen. At the outset, I'd like to welcome our Honorable Chief Minister of Odisha and Minister of Industries and officials of Odisha to Chennai. It has been a long dream for us to install a cement plant in Odisha. And it was important for us since we have a lot of markets in the East Coast, and we have now finalized a site in Jajapur district where we are installing a new modern grinding plant for cement. The state led by the Honorable Chief Minister, Shri Naveen Patnaik, is very industrial friendly. And when we approached the senior officials with our intention to put up a grinding plant in the state, we were welcomed by the state with a warm heart, which we can never forget. We met the Honorable Chief Minister and the team of officials from the Government of Odisha in August 2016 during the road show at Bangalore. Our previous chairman and my father, Sri P.R. Ramaswamy Raja, met the Honorable Chief Minister and requested permission for setting up a new cement plant in Odisha. The Honorable Chief Minister gave us permission wholeheartedly and directed the officials to assist us in getting all the required approvals. Setting up of a cement grinding plant nowadays is not easy because of the numerous approvals required, like environmental clearance, clearance for groundwater withdrawal, and other statutory approvals. But our experience in Odisha is very different. We could get all the approvals required to start the project without any trouble and well in time. As Odisha is a state where all the industrial projects are cleared based on a single window clearance, it is hassle-free for any entrepreneur. We made our application through a single window clearance, and all our approvals like environmental clearance, consent to establish, groundwater clearance, etc., were accorded without any delay. In fact, the state government officials, especially from the Office of the Industrial Development Corporation of Odisha, are following up with us
on their own with regard to the progress of the project. Also, I wish to mention here the Industrial Secretary was very cooperative in particular to ensure that the project is progressing very well. I want to record here the assistance rendered. तेज आपण सीधा सड़क चेन्नई रे आरंभ होइथवा मेक इन ओडिशार जो रोड शो कार्यक्रम रु ताजा चित्र देखुथिले एवं वर्तमान सेठारे अभिभाषण रखा जाउथला। वर्तमान बुलेटिन समय जाय छोटिया ब्रेक पर पुणी थे कार्यक्रम को आगे नवा।